Hey everyone, this is video number 3 in the series of pipe and cistern. In video number 1, I discussed what should be our strategy to deal with pipe and cistern problems. In video number 2, I solved 7 problems that were not so difficult, not so easy, but in this video, I'm going to be solving 5 very difficult questions from pipe and cistern, and if you can handle them, then you're exam ready from this topic's perspective. So these questions are also there in the description box. एक बार आप लगा के देखिए कि आप इन questions को manage कर पा रहे हैं कि नहीं. My first question is this. This one says that a swimming pool is being filled by 3 pipes. Is being filled by is not written here. It is missing. So typo mistake. By 3 pipes with the uniform flow. So their flow is uniform. All the 3 pipes. The first 2 pipes operating simultaneously fill the pool in the same time during which the pool is being filled by the third pipe. First 2 जितना समय लगाते हैं उतने ही समय में third वाला भर देता है. That is what this statement says. The second pipe fills the pool 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. So let us assume that the first pipe can fill this entire tank in X hours, right? So in how many hours the second pipe is going to fill? The second pipe is going to fill in how many hours? It says that the second pipe is 5 hours faster. अगर 5 hours faster है तो it is going to be taking what? X minus 5 hours. भाई अगर faster है तो उसको जो time लगेगा पहले वाले pipe से वो कम ही लगेगा. So what is going to be the time taken by the third pipe? Understand? And it says that it is 4 hours slower than the third pipe. So I would write this as X minus 9 hours. But if you really want to understand how did I write that, understand. This is the third pipe. Third pipe मान लो A hours में भर देता है. Is that okay? And the second pipe is 4 hours slower. So second pipe को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? A plus 4 hours लगेगा. Do you understand this? And A plus 4 is given to you as X minus 5. So if you need to find out what is going to be the value of A, because you want to find out everything in terms of X, so this is going to be what? X negative 9 is going to be the value of A. So अब आपको ये पता चल गया कि if the first pipe takes X hours, the second pipe is going to be taking what? X negative 5 hours and the third pipe is going to be taking X negative 9 hours. अब इसके बाद में इस स्टेटमेंट को आप यूज करो. वो क्या बोल रहा है? The first 2 pipes operating simultaneously fill the pool in the same time. So what did I say? LCM method cannot be utilized here because the comparative analysis has been done. जहां पे variable आ जाए वहां पे LCM से better. In fact, LCM is not going to be useful here. So you should be taking advantage of your ratio method. अगर पहले वाली पाइप को भरना हुआ, understand, in 1 hour the first pipe is going to be filling 1 by x of the entire tank, and the second pipe is going to be filling what? X minus 5 of the 1 upon X minus 5 of the entire tank. If you have not seen video number 1, 2 and 3 of time and work, please go and watch. This is where we have developed this understanding. अब ये दोनों मिलके this is the portion of the tank they are going to be filling in 1 hour, isn't it? अब वो यही बोल रहा है ना कि भाई जितने देर में ये दोनों कलेक्टिवली भर देता है उतने देर में ये भर देता है. तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में जितना पानी फर्स्ट पाइप एंड सेकंड पाइप ये दोनों मिला के लेके आएंगे, 1 घंटे में थर्ड पाइप अकेले उतना पानी डाल देगा. तो 1 घंटे में third pipe is going to be filling 1 over X minus 9 of the entire tank. And understand, this has to be the same. This has to be same. I solved one problem like this in the second video also. अब आप इसको क्या करोगे? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने चले गए ना, देखो अगर प्रॉब्लम को समझा जाए तो ये प्रॉब्लम है क्या? एक तो ये जो अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम देके रखा है, would you be able to convert this? आप ये लिख पाएंगे क्या? That's the first question. So it is a comprehension problem. Second, would you be able to write this in 1 line? और अगर ऐसा हो गया तो third, would you be able to take advantage of all these options that are given to you? क्योंकि अगर आप इसको simplify करेंगे
This is going to be a quadratic equation. We do not want to solve quadratic equation because we have got the options. Now, understand this. We need to find out what is going to be the value of x, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, the time needed by the first pipe to fill the tank. भाई first pipe को भरने में कितना लग रहा है, x hours लग रहा है. We need to be finding what is the value of x. Now, over here we have got value as x, x -5 and x -9. X cannot be less than 9. Do you understand this? In fact, x has to be more than 9. X has to be more than 9. Why you understand? Because if you take a value of x which is less than 9, then x -9 is going to be a negative value तो acceptable ही नहीं है. So 6 hours is gone. Do you understand? What if I take the second option out here? What if my second option is the right answer? So the value of x becomes 15. So this is 1 by 15. I'm just checking this. And this value is going to be how much? X minus 5 is 1 by 10. Or I know what is this? What is this? This is 1 over 15 minus 9. 15 minus 9 is 6. If this becomes 1 by 6, then this is our answer. Let us simplify this. So what do we have in denominator? This is 30. 15 and 10, their LCM is 30. And this is 2 and then this is 3. If we simplify, this is going to be 5 by 6, 5 by 30. 5 by 30 is 1 by 6. और अगर ये 1 by 6 हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये दोनों ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया. अगर ये नहीं करता हो तो आप सी पे चले जाते, सी नहीं करता हो तो आप डी पे चले जाते. इट इज स्टिल बेटर देन सॉल्विंग क्वेश्चंस थ्रू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय. ऑप्शंस रखा हुआ है, ऑप्शंस का एडवांटेज उठाओ. सो अंडरस्टैंड, द प्रॉब्लम इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. आवर अप्रोच इज डिफिकल्ट. आवर अप्रोच, ये निकाल दिया स्टेप नंबर 1, बड़ी अच्छी बात. आपने ये लिख दिया सेकंड स्टेप, बड़ी अच्छी बात. आपने इसके बाद ऑप्शन उठा लिया थर्ड स्टेप, बड़ी अच्छी बात. अगर आपने बीच में प्रॉब्लम को इलांगेट करना है, एक पेज में लगाना है, आपकी मर्जी, आप लगाओ इसको. बट प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज सिंपलर इन नेचर. मे बी आवर अप्रोच इज बिट हियर एंड देयर, राइट? So with that understanding, I would like you to simplify this problem. Now, here we have got the numbers and we have got the numbers. So LCM method is better method than that of ratio method. So what is that you should be doing in this problem? Which says that two pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 hours respectively. Both the pipes are open to fill the tank, but when the tank is 1/3 full, स्टेप नंबर 1. ये प्रॉब्लम ना मैं आधा पढ़ते पढ़ते मेरे को क्या दिमाग में आना चाहिए कि अगर मेरे को एलसीएम मेथड से लगाना है प्रॉब्लम को, व्हाट आई शुड बी डूइंग, आई शुड बी फाइंडिंग आउट एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, दैट इज कमिंग आउट एज 60. एंड इफ इट इज 60, व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द टैंक दैट आई शुड टेक. सो द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 60 लीटर्स. प्रीटी सिंपल. ये सब तो लिखना भी नहीं चाहिए एग्जाम पे. सो पाइप ए क्या करेगा? पाइप ए का रेट निकाल दो. पाइप ए फिल्स दिस एंटायर 60 लीटर्स इन 20 आवर्स. सो पाइप ए का रेट कितना निकल गया? 60 over 20, that is 3 liters per hour. How about pipe B? Pipe B fills this entire tank in 30 hours. So this is going to be what? 2 liters per hour. ये तो आप LCM मेथड में करते ही करते हो, ठीक है जी. Both the pipes are open to fill the tank, but when the tank is 1/3 fill, what is 1/3 of this 60 liter? It is 20 liters. So 1/3 is 20 liters. अब आपको अगर 20 लीटर्स फिल कराना है A प्लस B से, और A प्लस B, pipe A brings 3 liters of the water in 1 hour. Pipe B brings 2 liters of the water per hour. Collectively, they are bringing 5 liters of water per hour. 20 लीटर्स लाने के लिए इनको कितना लगेगा? 4 आवर्स लगेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब इतना तो दिमाग आप लगा ही सकते हो, ये तो पेन उठाने की जरूरत है नहीं इसमें. एट द रेट ऑफ 5 लीटर्स पर आवर, इन ऑर्डर टू फिल 20 लीटर्स, दे वुड बी टेकिंग कलेक्टिवली 4 आवर्स. अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है. 1/3 is full. A leak has been developed in the tank through which 1/3 of the water supplied by both the pipes goes out. 1/3 has been gone. If 1/3 is gone, what is that we are left with? We are left with 2/3. भाई 2 + 3 5 लीटर पानी अंदर आना चाहिए, यही है ना. ये रहा हमारा टैंक.
टैंक में आया 5 लीटर पानी 1 घंटे में, but one third of 5 liter is gone. So what is that you're left with? You're left with 2/3 of the 5 liter. So 2/3 of 5 liters. 1 घंटे में इफेक्टिवली पानी बच कितना गया? 2/3 of 5 liters. अब ये क्या कह रहा है? The total time taken to fill the tank. Understand this. Hold on a second. So as per our understanding, 2/3 of 5 liters, this much is being filled in 1 hour, because in 1 hour 1/3 of 5 liter is going away through the leakage. So 1 liter at this rate, if this goes on this side of equality, this is going to be 5 into 2, 10, 3/10 hours में 1 लीटर हो गया कंप्लीट। आपके पास में टैंक की कैपेसिटी बची कितनी? 20 लीटर हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड, 1/3 ऑफ द टैंक, एंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक वी हैव टेकन? 20 लीटर्स। अब 60 लीटर्स, नॉट 20 लीटर्स, 20 लीटर इज 1/3। आपको भरना कितना है? 40 लीटर्स। सो इफ यू हैव टू फिल 40 लीटर्स एट दिस रेट, हाउ मच टाइम यू आर गोना टेक? इट इज गोइंग टू बी 12 आवर्स। अब आप देखना, इज 12 आवर्स एन ऑप्शन? यस, and majority of the people would have A as their answer. ये गलत है। आपसे प्रॉब्लम क्या पूछा गया? The total time taken to fill the tank. Previously, both of the pipes took 4 hours to fill 20 liters when there was no leakage. तो वो 4 घंटे भी कैलकुलेट हो गए, और लीकेज की वजह से जो 12 घंटा और लगा, ये भी तो इंक्लूड होगा। So 12 plus 4, your answer is going to be not 12 hours. Rather, your answer is going to be 16 hours. And this is where you have got to be very mindful. You understand the entire concept. आप 3-4 मिनट लगा के प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करते हो, बट आप लास्ट वाली लाइन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, और उसकी वजह से आप गलत ऑप्शन लगा के चले जाते हो, राइट? सो दिस इज वेयर यू हैव गॉट टू बी। सब डिफिकल्ट प्रॉब्लम है क्या? डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज द गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, बिकॉज अब तक तो आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझे लिए होंगे कि हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम, what should be your strategy, what is the shortcut, what is the technique, but क्या आप प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंड करके उसको लगा पाएंगे? That's the challenge over here. Let us solve this problem out here. Oh, this seems to be a pretty big problem, but it is not a big problem at all. 5-6-7 लाइन जाते आते प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड हो ही जाएगा। This one says the bath can be filled by the cold water pipe in 10 minutes and by hot water pipe in 15 minutes independently. So मैं तो यही करूं, प्रॉब्लम इतना पढ़ते पढ़ते मैं तो पेन घुमाऊं, या पेन घुमाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई नो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 and 15. It is coming out as 30. So the capacity of the tank I am gonna take as 30 liters, and if that is the case, I can very easily find out. So cold वाला कितना, क्या रेट होगा? 30/10, which is what? 30/10 का मतलब हो गया 3 लीटर per minute. And what is the rate of the hot water pipe? It is going to be 30/2, which is 30/15, not by 2, 30/15. It is coming out as 2 liter per minute. So that's something that you can very easily do. A person leaves the bathroom after turning the both of the pipes simultaneously and returns the moment when the bath should be filled. Should be filled का मतलब कोई लीकेज होना ही नहीं चाहिए। अब आपने ये देखा कि जो कोल्ड वाली जो सप्लाई देने वाली पाइप है, उसका रेट कितना है? 3 liters per minute, और द सेकेंड पाइप विच इज गिविंग हॉट वाटर, उसका जो रेट है वो है 2 liter per minute. So cold plus hot, these two pipes collectively are giving 5 liters in 1 minute. अब वो आदमी वापस कब आएगा? उसको कब लगेगा भाई मेरा जो रेट है वो तो 5 liters per minute है, और मेरे को भरना कितना है? मेरे को भरना है 30 liters. 30/5, वो आदमी कितनी देर में वापस लौटेगा? 6 minutes में बेचारा वापस आ गया। ठीक है, प्रॉब्लम यही कह रहा है। Simultaneously returns at the moment, not moment, when bath should be filled.
finding however that the waste pipe has been opened and he now closes it. वेस्ट पाइप था तो उसमें से कुछ ना कुछ तो पानी निकला होगा. इन 4 more minutes बात is full. अब 4 मिनट उसको और लगता है. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब जो लीकेज था वो लीकेज उसने क्लोज कर दिया. तो 4 मिनट्स में एट द रेट ऑफ 5 लीटर्स पर मिनट 20 लीटर वाटर तो आया. कब आया? वो जो लीकेज क्लोज होने के बाद आया. और लीकेज कितनी देर में क्लोज हुआ? लीकेज क्लोज हुआ 6 मिनट्स के बाद. डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो 6 मिनट में तो जो इनलेट पाइप है, हॉट एंड कोल्ड इनलेट पाइप्स, दे आर ब्रिंगिंग इन द वाटर. कितना पानी लेके आएंगे ये दोनों पाइप? पानी तो लेके आ रहे हैं 30 लीटर्स. अंडरस्टैंड दिस. 30 लीटर पानी तो अंदर आया, बट उसकी वजह से कुछ लीकेज था. उस लीकेज की वजह से पानी बाहर गया. कितना बाहर गया होगा पानी? क्योंकि फाइनली इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 10 लीटर्स. अब अगर 4 मिनट में पानी भरा यहाँ पे 20 लीटर्स, तो इसका मतलब है कि पहले 6 मिनट में पानी भरा कितना होगा? इट वुड हैव बीन 10 लीटर्स. तो इसका मतलब है कि ये जो आउटलेट है, द लीकेज, इट इज टेकिंग आउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर इन हाउ मेनी मिनट्स? 6 मिनट्स. डज दिस मेक सेंस टू यू? होल्ड ऑन इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग. व्हाट डिड आई से? पहले आपने क्या किया? आपने यहां पे आपका अजम्पशन था कि 6 मिनट में भर जाएगा. Because what is the rate? 3 plus 2, 5 liters per minute. So 5 into 60, 5 into not 66 is 30. 6 minutes में भर जाना चाहिए था. 6 minutes में ये जो आदमी आया उसने देखा अरे यार तो भरा ही नहीं है, because there is a leakage. उसने फिल कर दिया. फिल करने के 4 मिनट बाद में वापस पानी भर गया. तो जो 4 मिनट था वहां पे तो लीकेज काम नहीं किया. और अगर लीकेज काम नहीं किया तो 4 into 5, 20 लीटर्स तो वो भरा लीकेज फिल होने के बाद में. इसका मतलब है कि जो शुरू के 6 मिनट थे वहां पे पानी कितना गया होगा? 10 लीटर्स. तो लीकेज के थ्रू पानी कितना बाहर गया होगा? 20 लीटर. सिंप्लीफाइड. और आपसे प्रॉब्लम क्या पूछा? इन व्हाट टाइम वुड बी द वेस्ट पाइप एम्प्टिंग इट? अब आपके पास में 20 लीटर इसने खाली कर दिया 6 मिनट्स में. एंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक दैट वी हैव टेकन? इट इज 30 लीटर. तो 30 लीटर्स अगर इसको खाली करना हुआ, so how much time this one is going to be taking? It's pretty simple for you to find out. It is going to be nothing but 9 minutes. Problem has been simplified. Let us try to solve this problem. This seems to be a very complicated problem, but it is not. You can solve this question in 2-3 steps. So pause the video, try to see if you can manage this particular question. This one says that a booster pump can be used for filling as well as emptying a tank. The capacity of the tank has been given to you, which is 2400 cc, right? The emptying capacity of the tank is 10 cc per minute higher than its filling capacity. So there are two capacities, filling capacity and emptying capacity. And the pump needs 8 minutes lesser to empty the tank than it needs to fill it. It needs to fill it. What is the filling capacity of the pump in cc per minute? आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इस प्रॉब्लम को बाय डूइंग दिस. आप ये देख लो कि आपको दी है फिलिंग कैपेसिटी. अगर आपने प्रॉब्लम लगाने की कोशिश करी तो ढेर सारे वेरिएबल आएंगे. मैं कह रहा हूं 3 ऑप्शन है, इनको प्लग इन करके देख लेते हैं. फिलिंग कैपेसिटी एज पर ऑप्शन नंबर 1 इज 50 cc पर मिनट, यही है ना. एंड द सेकंड ऑप्शन इज 60 cc पर मिनट एंड द थर्ड ऑप्शन इज 72 cc per minute. And problem also tells you that the emptying capacity is 10 cc per minute higher than its filling capacity. So can we find out what is the emptying capacity? It is 10 cc per minute higher. So this is going to be what? 60 cc per minute, and this one is going to be what? 70 cc per minute, and in this case it is going to be 82 cc per minute. मेरा ऑप्शन यहीं से बन जाएगा. मालूम है कैसे बन जाएगा? I know for sure because I need to find out time here, and in order to find out what is going to be the number of minutes in which the filling capacity will fill this 2400 cc tank, I will have to divide 2400 by these 3 values. और अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ इससे होगा और इससे होगा, बिकॉज 2400 इज नॉट इवन डिविजिबल बाय 72. बट अगर आप करके देखो 2400 by 50 विल कम आउट एज 48 मिनट्स.
Does this make sense to you? So at the rate of 50 cc per minute, the tank will be filled in 48 minutes. And if you have to fill at this rate, it is going to be 400 divided by 60, it is 40 minutes. प्रॉब्लम कहता है कि जो फिलिंग कैपेसिटी है नीड्स 8 मिनट्स लेसर, तो यहां पे 8 मिनट्स लेसर का मतलब कितना हुआ? What is going to be the time taken during the emptying capacity? When empty capacity are given to you, क्या यहां पे टाइम होगा? ये देख लो आप. 60 cc अगर है तो 2400 डिवाइड बाय 60, it is 40 minutes. 2400 cannot even be divisible by 70 and cannot be divisible by 82. तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों आंसर होने भी नहीं चाहिए. और अगर आप ये देखो कि भरने में आपको अगर 48 मिनट्स लगता है और खाली करने में इस टैंक को 40 मिनट्स लगता है, प्रॉब्लम यही तो कह रहा है ना आपसे. इट्स फिलिंग कैपेसिटी इज गोइंग टू बी 8 मिनट्स. व्हाट डज दिस? फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप नीड्स 8 मिनट्स लेसर टू एम्प्टी द टैंक. एम्प्टी करने में 40 मिनट्स, भरने में 48 मिनट्स. प्रॉब्लम हो गया सिंपल. मैंने तो कुछ करा भी नहीं, मैंने तो वो जो स्टेटमेंट्स दिए हुए ना उसको बड़ी पेशेंस के साथ लिखा और ये चेक किया कि डिविजिबिलिटी रूल कहां कहां की बन रही है. बिकॉज इफ आई गेट फ्रैक्शन देन आई एम गोइंग टू बी कॉन्शियस अबाउट इट. मेरे को तो नेचुरल नंबर चाहिए. नेचुरल नंबर के केस में 2400 इज डिविजिबल आइदर बाय दिस नंबर और बाय दिस नंबर. इट इज नॉट इवन बी डिविजिबल. 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70. अब 2400 इज नॉट इवन डिविजिबल बाय दिस ऑप्शन. प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड हो गया, आपका काम बन गया. राइट? आप लगाते फिरोगे तब भी आपको वही नंबर मिलेगा. आप इस वाले मेथड्स लगा दोगे तब भी आपको वही नंबर मिलेगा. आपको तो नंबर मिलने से मतलब है. Let us solve this problem out here. It says that the tank has two outlets A and B. Or this one is pretty simple. This one is really very simple problem. If you concentrate, if you have understood LCM method, then you can solve this problem in 3-4 lines. That is it. A tank has two outlets A and B, which together take 6 hours to empty a full tank when they are opened simultaneously. The tank was initially half full and both the outlets were opened. After an hour of inlet pipe was also यहाँ पे दो चीजें तो दी हुई है. एक तो ये 4 hours देख लो. वो 4 hours क्या है? कितनी देर में ये, if the inlet can fill in 4 hours and these two outlet pipes can empty the tank in 6 hours. So what is going to be the LCM? The LCM is going to be 4 and 6 12. आप क्या कर दो, आप कैपेसिटी ले लो टैंक की 12 लीटर्स. राइट? ये बड़ा क्रूशियल है लगाना. दिखने में बड़ा आसान है बट है बड़ा क्रूशियल. अब आप प्रॉब्लम वापस पढ़ते जाओ. तो व्हाट इज गोइंग टू बी द एम्प्टिंग कैपेसिटी? आउटलेट्स कितना पानी बाहर लेके जाएंगे? आउटलेट्स पानी बाहर लेके जाएंगे 12 divided by 6, which is 12 liters per hour, and that is a negative work. And what is going to be the inlet? Because inlet can fill this entire tank in 4 hours. So this capacity is 3 liters per hour. Positive work as per our understanding. अब प्रॉब्लम बनेगी, अब प्रॉब्लम अच्छे से बनेगी. ये बड़ी सिंपल वैल्यूज लिख लेना तो प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड. अब आप देखो ये क्या कर रहा है. When the tank was initially it was half full. What is half full? 12 liters is the capacity. So 6 liters तो ये भरा होगा, यही हुआ होगा ना. Half full and both the outlets were opened. ठीक है जी. Opened after an hour. तो 1 घंटे तक तो ये दोनों outlets open है. And what is the rate at which these outlets are taking out the water from the tank? It is 2 liters per hour. तो 6 minus 2 हो गया होगा. अब टैंक में पानी कितना बच गया? 1 घंटे के बाद 4 लीटर बच गया. अब प्रॉब्लम क्या कह रहा है? After an hour an inlet pipe X was also opened. अब आपने क्या कर दिया? इनलेट पाइप भी ओपन कर दिया. अब आप ये देखो, इनलेट इज ब्रिंगिंग 3 liters and outlets are taking out 2 liters of the water. So effectively पानी कितना भरेंगे? ये पानी भरेंगे 1 liter per hour, isn't it? भाई 3 अंदर आएगा, 2 बाहर जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 ही तो बचेगा. अब आपके पास में ये 4 लीटर भरा हुआ है. आपकी कितनी कैपेसिटी खाली बची है? भाई 12 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक. 4 भरा हुआ है तो कितना खाली है? 8 लीटर्स भरा है. उस 8 लीटर को भरने के लिए आपको टाइम कितना लगेगा?
It is going to be 8 hours provided the outlet pumps are open and inlet pump is also open. So what is going to be the answer of this problem? It is going to be 8 hours. देखो ना problem simplify कर दिया मैंने. Did I do it in a complicated manner? No, not at all. Is pipe and cistern topic complicated? Not at all. ये तो है कि बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप नहीं है, और वो हो गई तो फिर आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स 2-2 मिनट में लगाने शुरू हो जाएंगे. So this is what I had in this particular video and in video number, because कोई भी टॉपिक इनकम्प्लीट है जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैट की ना लगा लो. So I'm going to be solving all the questions that were asked in CAT 2018 and 19 from pipe and cistern topic, right? So I'm gonna see you there. Till then, bye bye and take care.